of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gau Mutra states. Gau Mutra states. We will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. This is the first instance where we see a state being converted into a union territory. And what is the main reason behind it? The BJP has just won many of these state elections and they have come into this house. They see themselves and their strength is always seen as winning elections after elections and going after micromanagement. But what happens in Jammu and Kashmir? Why are they not able to do that? Since they are not able to do that, they bring a state into a union territory where they can have control over the governor and then they can run the governance through that. If they were capable and if they were very confident of winning Jammu and Kashmir, would they have gone in for a union territory? So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gau Mutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. ये तो मुझे लगता है कि सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है और गौ मूत्र के क्या क्या लाभ हैं शायद डीएमके को भी समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है सनातनी परंपराओं की, सनातनियों की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और चाहे वो डीएमके हो या कोई भी हो, जो देश की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, देश की जनता इकट्ठा होकर उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। सनातन पे डीएमके इतना नहीं, वो दिखाई दे रहा है जी, एक साजिश के तहत ये सब कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन शायद इनको अंदाजा नहीं है कि इस प्रकार की भाषा का जो दुर्भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश की जनता उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। जवाब इनके सामने आएंगे। भाजपा का एक्सेप्टेबल ऑल इंडिया में है, इसलिए उत्तर पूर्वांचल से शुरुआत करके अभी साउथ में भाजपा का राज गोवा में है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में है। तो वो जो बोलता है उनका कोई ध्यान नहीं, जानकारी नहीं है, वो बोलने वाला बोल देते हैं, उसमें हमारा क्या आ सकते। लेकिन गाय माता के ऐसे गौमूत्र से इस तरीके से तुलना करना की, देखिए वो हिंदुस्तान का कल्चर जानते नहीं, ऐसे बोलते हैं, बोलने वाला बोलने दीजिए। लेकिन जनता किसका प्रति सदैव है, विश्वास किसको पास है? भाजपा का पास है। हमारा आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान का लीडर नहीं, वर्ल्ड का लीडर बन गया, उन्नयन का मुखौटा बन गया, इसलिए उनका बात में कुछ नहीं आ सकते। ये ओछी मानसिकता का परिचायक है और जब ये लोग कहीं नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह की बात करके हमें लगता है कि जो बयान इनका है बहुत ही ओछी है और ये पब्लिक, ये जनादेश है। राज्य की जनता ने विश्वास किया है, राज्य की जनता ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और देश की जनता का भरोसा, देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, आदरणीय मोदी जी पर है। आज हम विकसित भारत की संकल्पना जो आज कर रहे हैं, निश्चित रूप से लोग ये देख रहे हैं कि आज विश्व के स्तर पर, विश्व के पटल पर भारत की एक मजबूत दमदारी, मजबूत उपस्थिति है और भारत हर एक स्थिति में आज G20 का समिट ही अगर हम देखें
तो कितने मतलब बहुत अच्छे ढंग से G20 समिट हुआ और जो 20 देश के जो प्रतिनिधि आए बिल्कुल उन्होंने सराहा। तो कुछ ऐसे बहुत छोटे मानसिकता वाले लोग हैं जिनको ये सब पसंद नहीं आता, ये सब ये जो आज लोकप्रियता देश ही नहीं विश्व के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ रही है, उससे लोग तिल मिला गए। Regarding the national education policy, so the goal of the government in the national education policy is to have a gross enrollment ratio of 50%. This has already been achieved by Tamil Nadu, whereas India's gross national enrollment ratio is around 24.6. We are much ahead of the American gross enrollment ratio. Why is it that the government, central government is seen to thrust out the national education policy upon us? We have set principles and we have set models, the Dravidian principle models, which are successful models. If it wants to implement them for India to become a developed state, let them implement Tamil Nadu's model throughout the state. But instead, why is it being thrust upon us? We totally reject it. If they want, they can go implement it in Gau Mutra states, which they are very keen upon.